backlash against globalization. But notwithstanding, I'm saying that this is the vicious circle, which the United States is now recognizing. भास्कर जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, चर्चा फिर जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधे दृश्य एक बार फिर हम गोवा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पांचों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त मंच पर विराजमान हो रहे हैं और ये समय है जब ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की बैठक होनी है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष श्री केवी कामत अपनी रिपोर्ट भी इन राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखेंगे। तो महत्वपूर्ण पड़ाव है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, जब ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के तमाम सुझाव भी इसी मंच पर सामने रखे जाएंगे और जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल कदम उठाए गए हैं पिछले कई समिट्स के दौरान, उनमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का कार्य करना शुरू कर देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और ऐसे में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और साथ ही बिजनेस काउंसिल अपने तमाम सुझावों पर बातचीत करेगी और चर्चा करेगी इस वक्त, तो निर्णय लेने का वक्त है ये, जब राष्ट्राध्यक्ष निर्णय लेंगे कि कौन कौन से सुझाव को हम जमीन पर उतार सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रिस्ट्रिक्टेड लीडर्स की बैठक हुई थी, दैट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड मीट, और उसके बाद अब बिजनेस काउंसिल की बैठक हो रही है। योर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट मिशेल तेमर, योर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट पुतिन, distinguished members of the BRICS Business Council, it gives me great pleasure to welcome you to this meeting with the BRICS Business Council. The Council reflects the full economic diversity and depth of business engagement between our countries. I thank their contribution to the BRICS agenda of building inclusive economies through responsive and collective solutions. Excellencies and friends, promoting economic and commercial engagement has been a foundational impulse in the creation of BRICS. It is therefore encouraging to see the BRICS Business Council take healthy shape 3 years after we set up it in Durban. Our business communities are the strongest proponents for closer and faster commercial cooperation among BRICS. The partnership creates wealth and value in our societies and enhance productivity and create jobs in our economies through technological innovations and capacity addition. I applaud that vision. I share that vision. Excellencies, in India, we have undertaken substantial reforms in the last 2 years to streamline and simplify governance, especially doing business in India. The results are clearly visible. We have moved up in almost all global indices that measures such performances. We have transformed India into one of the most open economies in the world today. Growth is strong and we are taking steps to keep the momentum going. I am happy to note that the BRICS Business Council also had matching priorities of ease of doing businesses, dismantling trade barriers, promoting skills development, establishing manufacturing supply chains, and infrastructure development. The Council's work holds much promises of expansion of trade and business among BRIC countries. Excellencies, the new development bank is fully operational now. Its success is a concrete result
of our common efforts. We congratulate the NDB and its management for commencing the first batch of projects. NDB has kept clean energy and green and sustainable infrastructure as its priority. We welcome it. We would encourage the BRICS Business Council to work closely with the NDB on identifying and implementing prospective economic projects. India hosted the first BRICS trade fair in New Delhi 2 days ago with active participation from all your countries. Such activities must be promoted to generate greater business awareness and commercial exchanges. Excellencies, let me conclude by saying that as governments, we count on the BRICS Business Council to work with us to achieve our common aim of strengthening mutual trade, enhancing business opportunities, building investment linkages, promoting innovation, and removing bottlenecks to intra-BRICS commerce. In a little while, we will hear from the BRICS Business Council and the leadership of NDB. Thank you. Thank you very much. I now have a great honor to invite His Excellency President Xi Jinping of China for his remarks. 尊敬的莫迪总理，尊敬的祖马总统，尊敬的特梅尔总统，尊敬的普京总统，女士们、先生们、朋友们，大家好！ देवियों सज्जनों, 很高兴 सहयोगियों और 再次 मित्रों, 同新专 ये 国 मेरे 家 लिए बहुत ही 工商 गर्व 理 की 事 बात 会 है 的 कि मुझे ब्रिक्स के बिजनेस काउंसिल के मित्रों से मिलने का मौका मिल रहा है। पिछले साल 各位理事携手 हमारे सामूहिक प्रयासों के 将企业 कारण 发展融入 बिजनेस काउंसिल के सदस्य ने अपने बिजनेस को अच्छा विकास दिया। 促进新专国家整体合作。 बिजनेस कम्युनिटी के आपस में जो सहयोग के कारण बिजनेस सहयोग को काफ़ी बढ़ावा मिला है और इसलिए मैं उन सबका अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस समय पर जो भी अगर हम प्रभाव की बात करें आर्थिक अर्थव्यवस्था के संकट की तो वो भी अभी काफ़ी गहरी है और धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही है। और इन सब काफ़ी कारणों के कारण ये हो रहा है और इन सब कारणों के कारण जो विकास है वो थोड़ा धीमा पड़ा हुआ है, उसमें मंदी आई हुई है। लेकिन साथ में ही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन है वो काफ़ी उभर कर आ रहा है, उससे क्षमताएं काफ़ी बढ़ गई हैं, खासकर ब्रिक्स के देशों के लिए। और अगर हम लेबर फोर्स और रिसोर्सेज की बात करें लेकिन और इसलिए ब्रिक्स का विकास दर अभी भी पॉजिटिव है। जो बिजनेस काउंसिल के जो सदस्य हैं वो ब्रिक्स देशों के बिजनेस कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और वो मुझे विश्वास है कि वो और भी अच्छी तरह काम करेंगे ताकि वो अच्छी तरह अपनी भागीदारी इसमें निभा सकें। सबसे पहले कि आप जो सक्रिय काम करेंगे, ठोस काम करेंगे ताकि विकास हम सब देशों में बढ़े और ये सब जो है ये लाभदायक होगा पूरे देशों के लिए, लोगों के लिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी। मैं आशा करता हूँ कि आप
आपको जो लाभ मिले हैं उनका आप पूरी तरह से आप उसका लाभ उठाएंगे और आप ब्रिक्स के देशों में निवेश बढ़ाएंगे और अपनी जो वो सहयोग है, भूमिका है, वो और भी बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ऐसे सुधार लाएंगे जो कि नवीन होंगे। इससे जो है जो विकास दर है वो बढ़ेगी बिजनेस की, खासकर ब्रिक्स के देशों में। मुझे विश्वास है कि आप अपने नए अभिनव विचारों के साथ आप नए तरीके लाएंगे, आर्थिक रिस्ट्रक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और ब्रिक्स कंट्री देशों को एक सतत और संतुलित विकास रास्ते के ऊपर ले आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा सहयोग लाएंगे जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। जो बिजनेस काउंसिल है वो बिजनेस कम्युनिटी का को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है और आपका योगदान मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जो रणनीति है वो बिजनेस की वो ज़्यादा सहयोग के ऊपर आधारित है और इससे हम मिलजुल कर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम एक ठोस रूप दे पाएंगे। इससे हम सबके लिए जो भी सहयोग और जो भी विकास होगा हम सबके लिए लाभदायक होगा। प्रिय सहयोगियों, देवियों, सज्जनों, प्रिय दोस्तों, जो नया न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम है हमारे बातचीत का, हमारे सहयोग का। एक साल के ही स्तर में, एक साल के ही अंदर बैंक ने काफ़ी अच्छे काम कर लिए हैं और ये तभी हो सका है क्योंकि सारे जो पक्ष है वो उन्होंने मिलकर काम किया है। चाइना जो है वो बाकी ब्रिक्स के पक्षों के साथ काम करने को हमेशा तैयार रहेगा और उससे जो नए और अच्छे परिणामों की तरफ वो पूरी तरह से काम करता रहेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बन जाएगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। ब्रिक्स का जो सहयोग है वो अब एक नए स्टेज पे पहुंच गया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अवसर हैं और हमारे सामने, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सामने चुनौतियां भी हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिजनेस काउंसिल के सदस्य और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य जो हैं वो मिलकर जो है इन चुनौतियों का सामना करेंगे और एक बहुत अच्छा भविष्य ब्रिक्स के देशों और उनके देशवासियों को लाकर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank you, Mr. President. I now invite His Excellency President Jacob Zuma of South Africa to share his insight. Your Excellency, Prime Minister Modi, Your Excellency, President Xi Jinping, Your Excellency, President Tama, Your Excellency, President Putin, ministers, chairpersons of BRICS Business Council, distinguished guests, it is gratifying to see the progress made by the BRICS Business Council since its launch in South Africa in 2013. The establishment of the 7 working groups and the various activities and initiatives undertaken clearly demonstrate
the commitment by members of the Council to cement business ties among our countries. The Council was created as a platform to strengthen and promote BRICS economic, trade, and investment links, and to support regular dialogue between BRICS business communities and governments. This mandate is being fulfilled, and today's engagement is also a reflection of the continued commitment by BRICS leaders to this initiative. Following on the interactions in various summits, we have noted the Council's recommendations towards further developing an enabling environment for expanded inter-BRICS trade and investment. A lot of progress has been made in recent times. These include the implementation of the strategy for the BRICS economic partnership, the operationalization of the new development bank, and the BRICS contingent reserve arrangement. The BRICS export credit agencies' discussions on insurance and underwriting, the exploration of a BRICS rating agency, and the hosting of the first BRICS trade fair. To this end, the BRICS Business Council activities undertaken since the Durban Summit and the corresponding initiatives by BRICS governments has brought us to a point where the Council can be a true catalyst for economic growth. The various BRICS undertakings need to culminate in growing investments in and expanding value-added trade within BRICS, which should also support integration into global value chains. Accordingly, key projects and areas identified for cooperation with our BRICS partners include insurance and reinsurance cooperation, the BRICS Seed Bank, infrastructure, including electricity generation and transmission, the BRICS Cable Project, the African Union North-South Development Corridor, the Oceans Economy, cooperation in aviation and manufacturing. Furthermore, the new development bank, African Regional Center, which is being established in South Africa, will pay particular attention to project preparation, funding, and the implementation of continental projects. Your Excellencies, we commend the BRICS Business Council for the work undertaken so far. We urge you to continue advancing the economic agenda of BRICS. I thank you, Your Excellency.
I thank you, Mr. President. I now give the floor to His Excellency President Michel Temer of Brazil for his remarks. Senhor Primeiro-Ministro Modi, senhor Presidente Xi Jinping, senhor Presidente Zuma, senhor प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति जुमा, राष्ट्रपति पुतिन। सबसे पहले मैं जो इस इंडियन बिजनेस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं जो ब्राज़ीलियन सेक्शन के जो अध्यक्ष हैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। मैं जैसे ही बिजनेस समुदाय के साथ बातचीत करता हूं तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत आशावादी हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्राज़ील इकोनॉमी खासकर जो है वो अच्छे रास्ते पर चल पड़ी है और वो विकास को और रोजगार को वापस ले आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम प्रतिबद्ध हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को में सुधार लाने के लिए, और हम जो प्रणालियां हैं उनको जितना उनका उदारीकरण और उनको सरल बना सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ कानूनी अनिश्चितताएं अभी भी हैं, और लेकिन कोई भी पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट निवेश के प्रोग्राम हो वो उन पे हम पूरी तरह से काम करेंगे। हम इस समय 34 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, ऑयल और गैस, ऐसे 34 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम आजकल चल रहा है। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो अपना ओवरसाइट रोल दोबारा से शुरू कर देंगी, क्योंकि इन पहले कदमों को अपनाने के बाद हम जो हैं कि हम इन सब चीज़ों पे अपना नियंत्रण बढ़ा सकेंगे। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन भी है, उसको भी हम कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा कम हुआ है। और हम चाहेंगे कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो ब्राज़ील में आकर निवेश करें और इस जो नया एक जो माहौल बन रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। ब्राज़ील में आप देखेंगे कि इस समय पूरी तरह से राजनीतिक स्थिरता है और एक बहुत अच्छी कंज्यूमर मार्केट है। और मैं चाहूँगा कि जो कंपनियाँ ब्राज़ील में निवेश कर चुकी हैं वो अपना प्रेजेंस और भी बढ़ाएं। और मैं ब्राज़ील की बिजनेस कम्युनिटी को मैं इनका प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि वो और देशों के बिजनेस एनवायरनमेंट को भी समझने की कोशिश करें ताकि वो पूरे ब्रिक्स के देशों में अपना काम बढ़ा सके। मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिजनेस काउंसिल जो है वो हमारे देशों के बीच में सहयोग को बढ़ा सकेगा और नए बिजनेस के लिए कैटलिस्ट के रूप में आएगा सामने। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले से भी बता दिया है कि लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए मुबारकबाद दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है और काफ़ी सम्मेलनों का उन्होंने आयोजन किया है, और इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम सुधार ला सकते हैं उनमें खासकर हम चाहेंगे कि निवेश बढ़े। हम सब देशों में और खासकर हम चाहते हैं कि ये ब्राज़ील में हो, और इससे जो हमारी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूरे विश्व में अच्छे रूप से ऊपर आ सकें। मैं इसलिए हम अपने सब देशों में सफल डायलॉग को इनकरेज करता हूँ, और मैं देखता रहूँगा कि बिजनेस काउंसिल कैसे अच्छे काम कर रहा है, उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank you, Mr. President. I have pleasure to invite His Excellency President Vladimir Putin of Russia for his remarks. Уважаемый господин премьер-министр Моди, уважаемые коллеги, дамы и господа, Excellency Pradhan Mantri бизнес, Modi как ji, известно, играет
ключевую роль в решении стоящих перед सहयोगियों, देवियों और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि जो व्यापार और बिजनेस के समूह है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है आर्थिक विकास में और आर्थिक विकास में तेज गति लाने में। ब्रिक्स के नेतृत्व पूरी तरह जानता है कि बिजनेस कम्युनिटी ब्रिक्स के अंतर्गत आर्थिक फ्रेमवर्क को बढ़ा रहा है। जो बिजनेस काउंसिल है वो उसको 2013 में उसको स्थापित किया था। ये रूस का इनिशिएटिव था। ये जो काउंसिल है उसने एकदम ही काम शुरू कर दिया था और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ और पहल किए थे शुरुआत से ही। जैसे कि उन्होंने ऐसे प्रस्ताव डाले थे एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स को हटाने के लिए, कस्टम्स और टेक्निकल रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, वीज़ा सिस्टम को में सरलता लाने का काम की मांग रखी थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो ऑब्स्टिकल्स थे और जिससे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का और आर्थिक विकास में रोड़े या रुकावटें पैदा करती थी। एक साल पहले उफा में भी एक समझौता अडॉप्ट किया था और ये इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन का रोड मैप अब इस समझौते के आधार पर बनाया जा रहा है और ये जो व्यापार की कम्युनिटी है, समूह है, अंतर्राष्ट्रीय समूह है हमारे 5 देशों का, वो अब इस रोड मैप के तहत काम करेगा। बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस काउंसिल और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच में हम सहयोग बढ़ाएं ताकि हम बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ सुने और इस इंस्टीट्यूट को आगे ले जाएं। 12 और 14 अक्टूबर नई दिल्ली में जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा मिले हैं। जो पहला ब्रिक्स स्टेट फेयर है वो हुआ था और ये बहुत बड़ा आयोजन था और इसका योगदान रहेगा हमारे आर्थिक और तकनीकी समर्थन को बढ़ाने में। हाई कैपेसिटी कंज्यूमर मार्केट है और हमारे 3 बिलियन जो लोग हैं हमारे देशों में, इन सब के लिए एनर्जी रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करेंगे। रूस 5 देशों की अर्थव्यवस्था को और पास लाने में अपना योगदान देगा और इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है सारे बाकी देशों के बिजनेस को कि वो आकर हमारे यहाँ काम करें और हमारे साथ काम करें ताकि हम ब्रिक्स के देशों के बीच की जो साझेदारी है उसको पूरी तरह से हम उसको बढ़ावा दे पाएँ। धन्यवाद। I thank you, Mr. President. We'll now turn to the report of the BRICS Business Council. I have pleasure to invite Mr. Onkar Kavar to present the report. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable President of Brazil, Mr. Michel Temer, Honorable President of Russia, Mr. Vladimir Putin, Honorable President of China, Mr. Xi Jinping, Honorable President of South Africa, Mr. Jacob Zuma, Mr. K.V. Kamath, President, New Development Bank, colleagues of the BRICS Business Council, ladies and gentlemen, good afternoon. It's an honor and privilege for the BRICS Business Council members to present their 3rd annual report to the head of states today. Since the inception of the BRICS Business Council in 2013, members have collectively engaged through dialogue and exchanged the ideas of strengthening trade and economic cooperation. This is important to drive growth and development
given the global economic challenges we face today. Honorable Prime Minister Modi ji, I vividly recollect the 10-point agenda for the future of BRICS, 10 Kadam, that you had outlined last year at UFA. We are happy to note the progress made in all these initiatives through collective efforts of our leaders. The core theme of India presidency of BRICS, as mentioned by you, has been building responsive, inclusive, collective solutions. We have imbibed this philosophy in the working of the Business Council as well. The success of the first BRICS Trade Fair and exhibition organized by Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry is a testimony to this. A multifaceted and completely interactive business engagement, the BRICS Trade Fair saw participation of nearly 400 exhibitors from the BRICS countries. This initiative of Honorable Prime Minister Narendra Modi drew tremendous support from all other BRICS leaders, has become a landmark step forward towards implementation of the strategies for BRIC economic partnership. Thanks to all the leaders for their guidance in this endeavor, and we hope this becomes a permanent mechanism going forward. Yesterday, in our meeting of the BRIC Business Council, the member approved the annual report for 2015 and 16. The report details the progress, the implementation of the work agenda of the BRICS Business Council, makes some specific recommendations and interesting ideas for further engagement. Idea of BRICS rating agency that takes into account the emerging market realities was deliberated. This will facilitate a more thorough and complete credit rating analysis of the companies. We will continue the discussion on this, as well as study how to collaborate to develop markets for the private credit rating agencies. A few years back, we had discussed the idea of having a BRICS development bank. It is a reality today, and the speed with which the new development bank has made progress reflects our collective aspiration and intent to meet our development priorities. We firmly believe that NDB can be a catalyst in our growth. Business Council has thus sought NDB's support in creating BRICS Infrastructure Project Development Facility, Skills Development Fund, and a Renewable Energy Fund. We also urge the NDB to support development of local capital markets for intra-financing. Excellencies, may I add, the business community remains committed to address the social development concern of our economies through practical, innovative, and effective solutions. We believe that the BRICS Business Council can effectively engage as an advisory council to the new development bank for enhancing private sector participation in the development projects. We have therefore also requested NDB to provide an observer status to the chairpersons of BRICS Business Council. The Council also requests that BRICS country should create a BRICS angels network, which can help unlock the potential of talented young entrepreneurs across BRICS country, create an ecosystem of startup, thereby fostering entrepreneurship and promoting innovation. Agriculture and energy are the priority areas of cooperation of our economies. We have suggested sharing best practices in agriculture production, productivity, environment protection, water conservation, as well as food security. We should also collaborate more effectively in jointly developing energy efficient technologies. Your Excellencies, the annual report of the BRICS Business Council provides detailed recommendations, some of which I have highlighted today. The priority areas and the suggestions in the report are aligned to overall objective of attaining growth that is both sustainable and inclusive. We look forward to your guidance and advice in taking this suggestion and ideas forward. Before I close, I would like to mention the thrust laid by our leaders on regional outreach is very, very important. This year,
to complement the outreach effort of Government of India, BIMSTEC countries, we have also invited leading businesses from BIMSTEC countries to BRICS Trade Fair. Going ahead, we would like to be guided by our leaders on how you envision regional cooperation, which can be a win-win for all the BRICS economies. We would be happy to have a framework of such cooperation even within the BRICS Business Council. With these words, I would like to thank all the national chapters of the Business Council and the chairs for their exemplary support through the year and their valuable input in preparing the annual report. I also express my sincere gratitude to all the BRIC leaders. Thank you. Thank you, Mr. Omkarji. Finally, I would like to invite Mr. K.V. Kamath, the President of the New Development Bank, to share with us the first year experience of this significant joint initiative. Your Excellency, Prime Minister Modi, Your Excellency, President Temer, Your Excellency, President Putin, Your Excellency, President Xi Jinping, Your Excellency, President Zuma, I'm honored to be here and start by thanking our member governments for their support, without which we would not have been able to make progress. Shanghai, our host city, has been enormously supportive. At an operational level, we have approved loans in each of our member countries for an aggregate amount of US $911 million, and we have some more loans in the pipeline for this current year. These loans have been in the area of renewable energy. Thus, we have begun the process of establishing our credentials as an institution that supports green and sustainable infrastructure. Our shareholders have brought in capital as scheduled, with 3 countries, Russia, China, and South Africa, having paid in the second year's capital in advance. In July, we successfully closed the first green bond issue in China for an amount of renminbi 3 billion, or about US $450 million, out of an approval that the Chinese government has given us of renminbi 10 billion in due course. This is in line with our strategy of mobilizing resources from capital markets of our member countries wherever possible. Getting staff in place has been a priority, and we expect to have about 60 of our own staff on board by the end of this year and about 300 to 350 by the end of the 3rd year of our operation. We believe we should be a lean organization, agile and nimble to serve our member countries. Our African Regional Center is expected to open this quarter, and I assure President Zuma that it will work to the objectives that he has articulated. We believe that partnership with key national and global institutions is important, and we have established in the very first year several of these. I would like to take this opportunity to request your collective support, Excellencies, for NDB seeking observer status at the United Nations General Assembly, which several MDBs have. We are informed that the request to initiate this observer status would need to come from a member state or states. Looking forward, we are targeting incremental lending of around US $2.5 billion over the next year, and we believe that this would be largely in the area of sustainable infrastructure, green infrastructure, and we plan to raise about US $1.5 billion through bonds. We believe that providing local currency financing for projects minimizes the currency risk and reduces the effective cost for our member countries. We will, for that reason, seek to mobilize funds in the markets and currencies of our member countries. In the coming year, in the first half, we plan to approach the local bond markets in India, maybe via an offshore route, and will thereafter seek to approach other local currency markets in our other member countries. We will begin knowledge activities to enable sharing of experiences, building a pipeline, and working together with exchange of information amongst our members and our borrowers, and indeed with the BRICS Business Council. I think I take note of all the moves and initiatives that
Chairman Kamar has stated, and we will work on these. And it will be an honor to have the BRICS Business Council as an observer at the NDB. In conclusion, Excellencies, a year after our establishment, we are preparing ourselves to operate at scale, speed, and with quality. We will work in partnership with member countries and with other institutions. We will listen, learn, collaborate, and innovate. Thank you, Excellencies. Thank you, Mr. Kamath. Excellencies and friends, thank you once again. Hosting this interaction has been a rewarding experience, and I applaud your enthusiastic participation. We have all listened attentively to your forward-looking recommendations. This will be examined in depth and considered fully. We regard the voice and views of business from BRICS as invaluable to our growth and development agenda. I look forward to seeing the results from our deliberations soon. Thank you. Thank you all. ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। इस मौके पर आपने देखा कि ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की रिपोर्ट यहां पेश की गई। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष श्री कंवर ने ये रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स बैंक है, जिसको 1 साल काम करते हुए हो चुका है, इस ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री केवी कामत ने अपनी रिपोर्ट पेश की। और महत्वपूर्ण ये सब इस मायने में रहा कि जो सुझाव रखे गए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जिस तरीके से कहा है कि लोन्स के लिए जो राशियां मिली हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको सामने रखा गया। लेकिन साथ ही साथ बिजनेस काउंसिल ने बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं कि किस किस संदर्भ में वो किस तरीके से एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं।